Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. This is Gulzaman Narechu, lecturer in physics at Boys Degree College, Sevan Sharif. Today, our topic is power. From class first year, chapter number 7, our topic is power. And power is defined as, this is the definition of power: the work done on a body per unit time is called power. The other definition of power is also expressed as the dot or scalar product of force and velocity is called power. पावर जेको हूंदो आहे असांखे ॿुधाईंदो आहे त केतिरे टाइम में असां वर्क परफॉर्म कयूं ऐं स्लोली कयूं या तेज़ी सां कयूं, इहो टाइम ते डिपेंडेंट हूंदो आहे। इन मां साबित थियो त पावर खे बयानु कीअं कंदासीं, जॾहिं बि असां कंहिं बि बॉडीअ ते वर्क परफॉर्म कयूं गिवन टाइम में, त असांखे उहो छा मिलंदो आहे, उन बॉडी जो पावर मिलंदो आहे। ठीकु आहे। सो power tells us that how much energy or work is transferred either quickly or slowly. यानी पावर असांखे ॿुधाईंदो आहे त असां क्विकली कमु कयूं या स्लोली कमु कयूं, इहो डिपेंड कंदो आहे बॉडीअ जे पावर ते। ठीकु आहे। सो द फॉर्मूला ऑफ पावर इज गिवन एज पावर बराबर आहे work upon time, and power is equal to work upon time. This is AV means average power, and the SI unit of average power is given as the SI unit of average power is equal to the SI unit of work joule, the SI unit of time second. So joule per second, joule divided by second is equal to power. So we can say that 1 watt is equal to 1 joule per 1 second. So 1 watt असां तॾहिं चवंदासीं जॾहिं असां को वर्क परफॉर्म कयूं कंहिं बॉडी ते 1 जोल एनर्जी ख़र्च करे 1 सेकंड में, उते असांजो जेको पावर हूंदो उहो छा हूंदो, 1 वाट हूंदो। सो अदर यूनिट्स of power can also be expressed as in CGS, centimeter gram second system. The unit of power is erg per second, and in FPS system, foot pound second, yeah, in British engineering system, the unit of power is foot pound per second, and it is also expressed in horsepower, HP. So 1 horsepower is equal to 550 foot pound per second. ये जेको बाबा कॉन्सेप्ट आयो आहे पावर जो, इहो हॉर्स जे पावर मां असां वरितो वियो आहे, साइंसदान कढियो आहे। कहिड़े साइंसदान पावर खे बयानु कयो, जंहिंजो नालो साइंसदान जो जेम्स वाट, माना पावर जो जेको SI यूनिट आहे उहो वाट आहे। कहिड़े साइंसदान ॾिनो, वाट, जंहिंजो पूरो नालो आहे जेम्स वाट। ठीकु आहे। सो 1 वाट बराबर आहे 1 जोल पर सेकंड। इन जा अदर यूनिट्स जेके आहिनि बाबा CGS सिस्टम में ऐं FPS सिस्टम में बयानु कया विया आहिनि। जेके CGS सिस्टम में आहे उहो आहे अर्ग पर सेकंड, FPS सिस्टम में बयानु कयो आहे फुट पाउंड पर सेकंड, जेको बराबर आहे हॉर्स पावर जे। सो 1 हॉर्स पावर बराबर आहे 550 फुट पाउंड पर सेकंड। यानी जॾहिं को बॉडी वर्क कंदी 550 फुट पाउंड पर सेकंड, त उते जेको हॉर्स पावर हूंदो उहो हूंदो 1 हॉर्स पावर। यानी जॾहिं बि हॉर्स पंहिंजो वर्क परफॉर्म करे थो 550 फुट फोर्स लॻाए, त उते जेको टाइम हूंदो 1 सेकंड में, उहो हेतिरो 550 फुट इस्तेमालु थींदो। इन खे असां अगरि पर मिनट इस्तेमालु कयूं त असां लिखी सघंदासीं 1 horse power is equal to 33,000 foot pound per minute, and it is also expressed in watt as
1 horse power is equal to 746 watt, यानी 1 horse power बराबर आहे 746 वाट। ठीक है, सो इनके असां वधीक बयान कंदासीं पावर के इन तरीक़े सां त एवरेज पावर सां गॾोगॾु जो ॿियो कहिड़ो पावर आहे लिमिटिंग पावर, जंहिंखे असां इंस्टेंटेनियस पावर बि चवंदा आहियूं। अचो त उनखे बयान कयूं भला। Instantaneous power is then the limiting value of the average power is the time interval delta t approaches to 0, यानी जॾहिं बि टाइम जेको आहे लिमिटेड मिलियल हुजे, थोरो मिलियल हुजे, थोरे वक़्त में जेको अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिस टू 0 हुजे, वक़्फ़े वारो हुजे, उनखे असां इंस्टेंटेनियस पावर चवंदासीं बॉडी जो। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू लिमिट टाइम टेंड्स टू 0, टाइम अप्रोचिस टू 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा t। सो हिते टाइम लिमिट जेका बाबा मिलियल आहे उहो 0 मिलियल आहे। सो अहिड़े तरीक़े सां असां इक्वेशन 1 जेका आहे इनखे बयान करे सघंदासीं बाबा। इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज पावर एवरेज बराबर आहे वर्क, एज वी नो दैट work is equal to force and displacement. So here force displacement upon time, and we already know that the change in displacement per unit time is called velocity of a given body. So force displacement upon time and displacement upon time is equal to velocity. So according to the definition, second definition of power is the dot or scalar product of force and displacement is called power. So here is average power is equal to, formula of average power is equal to force dot velocity, and in magnitude we can write as force velocity cosine of the angle. Here theta is the angle between force and velocity. So theta is the angle between force and velocity. Now the properties of work, because power depends on work, so the properties of power can also be written as so power depends on 3 factors. Number 1, force. Number 2, velocity. Number 3, angle between force and velocity. So the first property is if the angle between force and velocity is 0 degree. Force and velocity is 0 degree. It means that if a body is performed work by applying a force and it moves covers a displacement in a given time, it means the velocity in the same direction, along the same direction, then the angle between force and velocity is 0 degree. यानी फोर्स ऐं वेलोसिटी विच में अगर एंगल 0 डिग्री हुजे तो पोइ असां छा लिखंदासीं बाबा, पावर बराबर आहे एफ वी कॉस एंगल 0 डिग्री ऐं कॉस 0 बराबर हूंदो आहे 1 जे। अचो त चेक करे ॾिसूं भला एफ वी। सो पावर बराबर आहे एफ वी, यानी हिनखे चवंदासीं असां पॉजिटिव मैक्सिमम पावर। ठीक है। द सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90 degree, it means that force and velocity is making an angle 90 degree, means both are perpendicular to each other, then we obtain 90 degree and the power is equal to FV cos 90 degree. As we know that cos 90 degree is equal to 0. So the baba sa 0 put up kandasi, the power sa kimalo FV cos 0 90 बराबर है 0। सो 0 कहीं पे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना सा जवाब 0 अची वेंदो। ठीक है। सो नंबर 3 प्रॉपर्टी इज इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 180 डिग्री, यानी जॾहिं भई फोर्स ऐं वेलोसिटी हिक ॿिए जे अपोजिट डायरेक्शन में हुजनि उते एंगल ठहंदी 180 डिग्री। सो पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस 180 डिग्री जेको बराबर आहे -1 जे,
एंड -1 जॾहिं असां मल्टीप्लाई कंदासीं फोर्स ऐं वेलोसिटी सां त उते असांखे छा मिलंदो मैक्सिमम पावर मिलंदो जंहिंजो फार्मूलो असां हिन तरीक़े सां लिखी सघंदासीं पावर बराबर आहे FV cos 180 is equal to -1 and we obtain power is equal to -FV इन जो मतलब आहे त पावर असांखे नेगेटिव मैक्सिमम मिली सघंदो कहिड़ी एंगल ते बाबा 180 degree ते the other one property of the power is if the angle between force and velocity is 270 and it means that force and velocity both are counter perpendicular or anti-perpendicular then it makes an angle 70 degree and cos 270 degree is equal to 0 and we obtain zero result in power. So power has zero value when force makes an angle with the velocity 270 degree then we obtain power 0 degree. So we can say that power tells us that how much energy is transferred either quickly or slowly. मिसाल जे तौर बाबा असां वटि हिकिड़ी मशीन आहे वॉशिंग मशीन वठी वठूं था असां उन वॉशिंग मशीन हिकिड़ी आहे असां वटि नई वॉशिंग मशीन आहे ॿी असां वटि पुराणी वॉशिंग मशीन आहे मिसाल जे तौर असां उनखे अगरि क्लॉथ वॉश करण लाइ इस्तेमालु कयूं था हिकिड़ी नई मशीन जेका आहे उहा कपिड़ा क्लॉथ वॉश करे थी हाफ एन आवर ॿी जेका पुराणी वॉशिंग मशीन आहे उहा पंहिंजा इस्तेमालु कयूं था कपिड़ा वॉश करण लाइ उहा टाइम वठे थी 1 कलाक 1 आवर त भली मशीन कहिड़ी थी जेको टाइम थोरो वठे ऐं कमु असांजो ओतिरो ई करे इन में साबित थियो त पावर टाइम ते डिपेंडेंट आहे जेका मशीन जेका बॉडी ज़्यादा टाइम वठंदी उन जो पावर घटि हूंदो आहे ऐं जेका मशीन थोरो टाइम वठे उन जो पावर ज़्यादा हूंदा त अहिड़े तरीक़े सां खोड़ सारा मिसाल आहिनि हिन पावर जा